Right. So we talked about the journaling bit last. The journaling class, I watched your YouTube, but I didn't attend the class. Acha, but did you do the exercise? Yeah, I did. Okay, good. Did you get some clarity out of it? Yes. That's nice. That's nice. Right. So I hope everybody got a good idea कि like वो journaling. I'll just show it to you also. अब मैंने Tag Mango पे upload कर दिया and I sent it on the WhatsApp group also, right? What was it? I gave a few prompts that you can see and do it yourself. जो prompts है of कहाँ पे चले गए यार? हाँ, journaling के. So your goals regarding food photography that becomes clearer, right? So उसी के ऊपर फॉलो अप मेरा आज का सेशन रहेगा थोड़ा सा, देन विल कंटिन्यू आवर ओन लाइक बेसिक थिंग जो हम करते हैं। और माइंडसेट के ऊपर बहुत वर्क करना चाहिए बिकॉज माइंड स्किल सेट इज नथिंग विदाउट द माइंडसेट पार्ट। सो ये मैंने जर्नलिंग के प्रॉप्ट्स दिए थे लास्ट वेंसडे की रिकॉर्डिंग में फिर से डाल दूंगा आज ग्रुप पे। वॉच थ्रू दोस एंड सिट डाउन एंड राइट दोस थिंग्स, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू राइट दोस, नहीं तो बताऊंगा मैं, वो भी आज बताता हूँ। ठीक है, लेट्स गो अहेड एंड यस। ठीक है, एक सेकेंड। राइट, सो सुबह मैं इसके सेशंस बना रहा था, सेशन के स्लाइड्स। लेट्स सी। कुल। राइट, सो हाय रूपाली, आर यू देयर? हाय कल्याणी। Hi, hi. हेलो। सो यू डिड यू कंप्लीट द लास्ट सेशन के टास्क्स जो मैंने बोले थे? Yes, जॉब yes, द yes. ओके ओके परफेक्ट। राइट, कुल। सो आज ये टाइम पे ना, लाइक आई वांटेड टू डिस्कस अ फ्यू थिंग्स फॉर रिगार्डिंग लाइक मूविंग यू क्लोजर टू योर गोल्स ऑफ फूड फोटोग्राफी। स्किल सेट एंड ऑल मैं सिखा रहा हूँ, डेफिनेटली वो एक रिच करते हैं, बट देयर शुड बी एन एस्पेक्ट ऑफ माइंडसेट एंड प्रोडक्टिविटी ऑल्सो, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यू टू वेस्ट योर प्रेशियस मेंटल एनर्जी एंड योर टाइम ऑन जस्ट लाइक बेसिक थिंग्स, राइट? सो वो मैं आपका लाइक एक क्लियर कर दूंगा, देन फिर विल मूव ऑन टू everything else, right? So I want you to be active in the chat box. I will ask you some questions, I want you to answer those. Okay, so let me know in the chat box, do you relate to that you are in a constant loop when it comes to food photography, that एक तो आप बहुत anxious हो जाते हो that you are not able to shoot food photos, और ऑन दी अदर हैंड यू जस्ट प्रोक्रेस्टिनेट जब भी मैं टास्क देता हूँ या फिर आपको शूट करना है खुद ही या फिर प्रैक्टिस करना है आपकी किक्स के एंड ऑल, सो यू आर इन दैट मोड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। आपकी लाइफ एक तरफ एंड ये दोनों चीजें एक तरफ हो जाते हैं। सो इट्स ऑल यू नो लाइक यू गेट एंग्शियस एट वन पॉइंट, और यू गेट जस्ट लाइक प्रोक्रेस्टिनेट, एंड प्रोक्रेस्टिनेट यानी लेजी फील होता है ना, लाइक हम अवॉइड करते हैं द हार्ड थिंग्स दैट आर नेसेसरी फॉर यू टू रीच योर गोल्स, वी अवॉइड दोस थिंग्स, राइट? So let me know in the chat box, are you relating to this thing? Yes or no? Either you get complete anxious thinking about कि यार क्या करना है, कैसे करना है, मुझे नहीं आता है, मैं तो कर नहीं सकती हूँ, मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है। और जब बारी आती काम करने की, यू प्रोक्रेस्टिनेट। आई एम लाइक यार ठीक है ना यार, बाद में देखते हैं, पहले नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, पहले नेटफ्लिक्स करना है, पहले हमको मैंगोस खाने हैं, फिर हम देखते हैं सेशन के रिकॉर्डिंग्स, फिर हम करते हैं शूट उसकी। ठीक है, तो बेसिकली प्रोक्रेस्टिनेट को अवॉइड करने के लिए ना, देयर इज ओनली वन थिंग दैट इज कॉल्ड एज डिलेड ग्रेटिफिकेशन। जो भी स्वीट चीज या फिर बहुत इजी दिखने वाली चीज और फील करने वाली चीज, इफ यू कैन जस्ट अवॉइड इट एंड डिले इट अ लिटिल बिट। किसको तो भी माइक चालू है, कैन यू जस्ट आई म्यूट एवरीवन? या ठीक है, right? So if you can just avoid those things and do the tasks first, it would be much better for you to reach your goals, right? So that's the way to beat the procrastination वाला thing. And of course अगर आप action वाले मोड पे चले जाते हो ना, तो anxiety गायब हो जाती है, right? क्योंकि when you are just taking action, either you are succeeding or you are failing in that particular aspect, and that feeling is not a failure, it's just a right step towards the next thing. क्योंकि लाइक एक हो जाता है कि अच्छा मैं अगर लाइट प्रॉपरली नहीं शूट कर पा रही हूँ उस चीज का, माई लाइटिंग इज नॉट दैट प्रॉपर फॉर दिस थिंग, आई वुड थिंक अबाउट इट,
and I'm like gauging कि okay मैं कैसे fix करूँ, then my mind starts running towards the solving of that problem instead of कि oh मैं तो ये कर ही नहीं सकती हूँ. वो limiting thought चले जाता है when you are just biased towards action, taking action कि यार ये करना है उसके बाद ये करना है, ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम हुई तो ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. You would have like 10 solutions ready. Even if they are hypothetical solution, you are ready to tackle them in front, right? So that's the thing. So you have to get out of this trap and just tell me in the chat box, can you hit your goals this way of just being in the loop of anxiousness and procrastination? Or you would be there, you can hit your goals while being happy also. What do you think? Can you hit your goals this way without losing happiness? या फिर कंफ्यूजन में ही रहेंगे, एंग्जाइटी में ही रहेंगे और इनएक्शन में रहेंगे? व्हाट डू यू थिंक? राइट? एंड देयर इज अ वे ऑफ गेटिंग मोर आउट ऑफ लाइफ while being happy, because ये थोड़ा सा philosophical हो जाता है, because life is pretty finite and you only have one chance in it. So better act on it as quickly as possible. ये अपना गोल है. If that's your goal, just go forward with it 100% attention के साथ. नहीं तो करना ही नहीं, right? So either you let life float you away where it wants to take you, or you take a hold of the wheel of life's boat and steer it according to where you want it to be. Okay? So what do you want? Do you want life to float you according to life, or do you want to take the hold of that wheel? Just type float or wheel in the chat box. What do you want? Do you want the life to float you where it wants to take you, or you want to grab the hold of it and you want to do it yourself? Wheel, right? And वो व्हील बनाने के लिए, व्हील को एक्ट करने के लिए वो लक से नहीं होगा, एक सिस्टम रखता है, राइट? देयर हैज टू बी अ सिस्टम दैट यू हैव टू फॉलो, एंड वो सिस्टम हम अभी देखेंगे कि कैसे बना सकते हैं खुद के लिए. ठीक है? सो वी कवर्ड द जर्नलिंग थिंग लास्ट टाइम, राइट? मैं आपको एक टेम्पलेट दूंगा ऑफ अ सॉफ्टवेयर नोन एज नोशन. सो उसमें हम चीजें ट्रैक करेंगे. ईच एंड एवरी वीक वी आर गोइंग टू ट्रैक आवर प्रोग्रेस. सो I'll show you that also, what exactly happens in that Notion software. And उसके हिसाब से we'll have the rating system and we'll track the task. मैं आपको मेरा पूरा like whatever I am doing in my coaching business right now and my freelancing also, I'll show you that. So then you will get an idea कि okay ऐसा ऐसा चीजें कर सकते हैं. Right now I am living my life according to a calendar, proper calendar, and I am very happy doing that because मेरा goal clear है, मुझे कहाँ जाना है, and every minute is properly spent on proper activities. ठीक है? So I'll teach you those things कि exactly कैसे चीजें करते हैं and note down कैसे करते हैं चीजें, right? So I'll walk you through those things. First, I think I'll cover the note taking thing. I'll show you my note taking softwares first. बहुत easy है, notebook समान है वो. Okay. So if you see on my screen right now, this is called as this software is Microsoft OneNote. ये मैं close करके बताता हूँ so that I can open it once again. ये Microsoft का जैसे वो Excel और Word है ना, Microsoft OneNote. If you have a laptop और mobile phones पे भी रहता है actually. So this is that software that I'm using right now. I'm using it since 8 years or something like that now. Okay, so it's a very old system that I am using. And ये Microsoft OneNote क्या है exactly? If you see on the left hand side, I am doing a daily journaling. And ये journaling वो आपको मैंने last Wednesday वाली journaling बताई थी, वो वाली नहीं है. It's just daily के tasks. So मेरे को IC, that is inner circle, right? So मैं क्या क्या बात करने वाला हूँ उसमें बस brainstorm किया. So that's about brainstorming और task, क्या क्या task करना है मुझे. Everything is properly written over here. Whatever I am thinking, everything is over here, right? So that's how you use this particular OneNote का notebook. And बहुत अच्छा है इसमें. If you see, ऐसे ये notebooks है. The notebooks that you have, journals you have, it's similar to that. And notebooks में जैसे sections रहते हैं ना, ये अभी आप देख पा रहे हो, blue, yellow, green, right? So these are sections inside a notebook. And ये मेरा yearly वाला book है, जिसमें मैं year like मेरे हिसाब से sections है, and उसमें मेरे months के पूरे noted down है, right? So everything is over here. Every day I am writing something or the other.
ठीक है. So that's the one thing that you can download, Microsoft OneNote, and that's about every like जो आप नोटबुक पे लिख रहे हो ना, मैं पहले नोटबुक पूरा नोटबुक पे ही लिखता था. बट द प्रॉब्लम आई स्टार्टेड टू फेस इज 4-5 नोटबुक्स भरने के बाद आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड कि और कितने मैं नोटबुक्स खरीदूं, राइट. सो दिस सॉल्यूशन इज अ बेटर सॉल्यूशन फॉर राइटिंग ऑल ऑफ योर थॉट्स इन अ प्रॉपर वे, जो आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो, कहीं पे भी लेकर जा सकते हो. सो इट्स अ मच बेटर वे टू कीप योर नोट्स, टू डाउनलोड योर इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर ब्रेन टू अ डिवाइस. ठीक है. तो आप लैपटॉप पे कर सकते हो, एंड दैट माइक्रोसॉफ्ट वन नोट इज फ्री टू यूज. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट आई विल टेल यू कि आप इधर पूरा लिख सकते हो. दैट्स हाउ यू राइट एवरीथिंग. एंड आई शो यू. मैंने मार्च खत्म करके, जो मार्च खत्म हुआ, अभी तो 16 अप्रैल, तो बहुत लेट है ये दिखा रहा हूँ, बट इफ यू सी आई रोट एवरीथिंग डाउन. मेरे 40-50 चीजें मैंने किए थे, राइट. सो एंड आई रोट ऑल ऑफ द इनपुट्स कि मैंने क्या क्या चीजें डाले हैं. वॉट डिड आई डू इन द होल मंथ इटसेल्फ. छोटे से छोटी चीज की, लाइक यार मैंने एक मनी ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया मेरे मोबाइल में, आई स्टार्टेड दैट. देन एक जीपी वॉल्ट, इफ यू रिमेंबर, वो बताया था, पिक्सल थॉन. देन और क्या बताया था मैंने, बहुत सारे अलग अलग चीजें की है मैंने. ठीक है. सो राइट एवरीथिंग डाउन, ईच एंड एवरीथिंग दैट इज गोइंग टू help you take better decisions and take you closer to your goals of food photography, right? So that is the first thing. And if you go back to this thing, let's see. आपको मैं रेटिंग सिस्टम अभी बताता हूँ, रेटिंग सिस्टम आपको कैसे एक्सेस करते हैं. होल्ड ऑन. या सो दिस इज द टेम्पलेट दैट आई हैव बिल्ड फॉर यू. इसको यूज कैसे करता है, आई शो यू, बट आई शो यू माई व्यू ऑफ दैट कि लाइक मैं एग्जैक्टली कैसे यूज कर रहा हूँ फिलहाल मेरे इसमें. So if you see, everything is written over here, life goals, then sales के क्या चीज है, fulfillment का क्या करना है मुझे, right? So everything is written over here. So in your case, let's take example of, we have only two use cases right now. Either you are a freelancer or you are a home baker right now. So आपको क्या करना है, इसको मैं टेम्पलेट शेयर करूंगा अभी. You have to duplicate it. ठीक है. इसको आपको डुप्लीकेट करना है, एंड यू हैव टू राइट डाउन योर लाइफ गोल्स इसमें. इधर ये नॉट स्टार्टेड है, देन इन प्रोग्रेस है, कैंसल्ड भी लिख सकते हो. देन आपका एक सेल्स का रहेगा कि सेल्स मुझे अगर करना है, सेल्स एंड मार्केटिंग अगर आप लिख सकते हो फॉर योर होम बेकिंग थिंग. सेल्स एंड मार्केटिंग का अगर ट्रैक करिए, अच्छा हैपनिंग, राइट. सेल्स एंड मार्केटिंग का अगर आप लिखे इधर, सो नॉट स्टार्टेड में इफ आई जस्ट, this is the Notion software website that I'm using right now, and it's a very good software to use for planning and organizing all of your thoughts. So let's take example baking, sales and marketing में, the task that I gave you 3 weeks ago or something like that, build a B-roll library. ठीक है. सो ऐसा ये उसका एक नोट बन गया. देन उसको मैं ओपन करूंगा तो साइड में ये लिखा है. देन वॉट एवर आई गेव यू, बेकिंग के रिलेटेड बी रोल लाइब्रेरी कौन से थे हमारे, जो बेकिंग का प्रोसेस था वो, देन शॉपिंग प्रोसेस था वो, देन क्लाइंट कन्वर्सेशन प्रोसेस था वो, राइट. सो एवरीथिंग वाज डिस्कस लास्ट टाइम, हमने किया था एक वेंसडे को, मार्च एंडिंग में वगैरह, राइट. सो ये हमने चीजें बताए थे. सो इफ यू सॉ, बेकिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर मैंने एक बिल्ड अ बी रोल लाइब्रेरी लिखा था. देन बेकिंग, फुलफिलमेंट एंड ऑपरेशंस. सो ऑपरेशंस क्या क्या रन कर रहे हो आप, यू कैन ट्रैक ओवर हियर. सो लेट्स से नॉट स्टार्टेड में जाके इसको मैंने सिलेक्ट किया, सिंगल क्लिक लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट किया, एंड देन इसको मैंने शो किया. सबको शो कर देता हूं मैं, इट वुड बी बेटर फॉर यू, राइट. सो नॉट स्टार्टेड में लेट्स टेक एग्जांपल, बेकिंग, फुलफिलमेंट में, ऑपरेशंस में जस्ट परचेसिंग. जो आप इन्वेंट्री वगैरह करते हैं राइट नाउ, यू आर डूइंग ऑल ऑफ दिस इन्वेंट्री ऑन अ नोटबुक, राइट. सो इट्स बेटर टू डू इट हियर सो दैट एवरीथिंग इज ट्रैक्ड प्रॉपरली. और ऑनलाइन कहीं पे भी आप एक्सेस कर सकते हो, यानी आप शॉप चले गए और आपके नोटबुक में ही, जर्नल में ही पूरी चीजें लिखे हुए थे, एंड यू डिड नॉट गेट अ पिक्चर ऑफ इट. सो दैट्स
दिस थिंग कम्स इन हैंडी इन दैट सिचुएशन कि ऑनलाइन कहीं से भी आप देख सकते हो सेम थिंग, राइट, नोशन को. सो परचेसिंग इन्वेंट्री ऑब्जेक्ट्स, दैट कैन बी वन थिंग ओवर हियर. देन वीकली ट्रैकिंग में आप ये कर सकते हो कि बेसिकली नोट डाउन योर ब्रेक थ्रूज कि बहुत अमेजिंग आपने क्या वर्क किया. लेट्स टेक अभी आपको ये अप्रैल W2 इज द वीक 2, W1 इज द वीक 1, 1st to 7th. एंड लेट्स टेक एक नया बनाओ प्लस जाके मैंने अप्रैल, आई राइट अप्रैल W3, राइट. सो दैट वुड बी व्हाट 13th to 20th आसपास. ठीक है. सो इसको मैं सबसे फॉरवर्ड लेकर आ रहा हूँ इधर ऐसे. सो अप्रैल W3 13 to 20. लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल 17 तारीख को आपने यू बेसिकली डिड दिस सेशन ऑफ जर्नलिंग. आपने जर्नलिंग किया एंड यू cemented your goals for food photography and your baking business. Journaling activity cemented goals for the year. राइट. सो बेसिकली ये आपने अगर एक एक्टिविटी किया, ये पूरा वीकली ट्रैकिंग है कि वीक बाय वीक आपने क्या क्या चीजें चेंज किए. देन डे टू डे वर्क पे आते हैं. बिकॉज इफ यू कैन विन योर डे यू कैन विन योर वीक. व्हेन यू विन योर वीक यू कैन विन योर मंथ. And when you win your month, you can win your year. So it starts from day to day activity की क्या करना है, राइट. तो मेरे इसमें आइडिएशन, स्क्रिप्टिंग एंड ऑल है. आप डायरेक्टली इधर आके चेंज कर सकते हैं. सो अगर आप ये हुआ कि लाइक वर्क टू डू, हमें आपका लाइक डे टू डे टास्क रह सकते हैं. आइडिएशन के जगह लेट से बी रोल शूटिंग, रोज कुछ ना कुछ 3 बी रोल्स वीडियोस लेने के 2-2 सेकंड के, राइट. सो बी रोल क्लिप्स आपने क्या क्या किया आज के. देन स्क्रिप्टिंग के अलावा आप क्या कर सकते हो, और रीचिंग आउट टू क्लाइंट्स. सो जो भी इन एसेंशियल थिंग्स है यू कैन ट्रैक ओवर हियर. देन कम्स द रेटिंग वाला सिस्टम विच आई टोल्ड जस्ट नाउ. एवरी वीक आई वांट यू टू रेट योर स्किल सेट लेवल. सो लाइटिंग का इफ यू सी 1 to 5 ऑफ अप्रैल मंथ, आप पूरा अप्रैल खत्म करने के बाद जस्ट रेट योर सेल्फ कि अगर आप इस पे टैप करोगे नंबर पे, यू आर एबल टू सी 5 4 3 2 1 5 ऑप्शन है. रेट योर स्किल्स. लाइटिंग का हाउ मच डू यू रेट योर सेल्फ, लेट्स से 3. कंपोजिशन का हाउ मच डू यू रेट योर सेल्फ. कंपोजिशन बाय कंपोजिशन मीन्स विजुअल एस्थेटिक्स पूरा, राइट. सो यू वुड रेट योर स्किल्स ऑफ विजुअल एस्थेटिक्स कमिंग ओवर हियर. ठीक है. सो 5 4 3 2 1. एंड देन टाइम मैनेजमेंट स्किल्स. सो मैं कैलेंडर के बारे में भी बताऊंगा. हाउ मच आर यू एबल टू हिट योर गोल्स फॉर द टाइम. आप कर पा रहे हो क्या उतने. अगर आपने इफ यू आर गिविंग 1 hour फॉर शूटिंग योर पर्टिकुलर शूट, are you able to do it under 60 minutes or is there anything lacking, or and why is it lacking? And before that, before finding out the reason, you will rate your skills. Like are you able to do it in efficient manner, वो हम देंगे. अगर बहुत ज्यादा efficient है तो 5 देंगे, right. Journaling and thought clarity, I want you to do that journaling exercise at least in a like once in a month is good enough pace for that. ठीक है. सो जर्नलिंग आपने किया क्या, या फिर थॉट क्लैरिटी है क्या आपकी. वॉट एवर यू आर थिंकिंग इज आर यू एबल टू राइट इट डाउन प्रॉपरली एंड आर यू एबल टू कन्वे इट टू योर क्लाइंट्स और योर कस्टमर्स. ठीक है. सो गिव अ रेटिंग ऑन दैट एज वेल. एंड आर यू प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स योर गोल. ये आपको मंथ बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आए, बहुत ज्यादा क्लाइंट ऑर्डर्स आए, या फिर बहुत स्लैक हो गए, लाइक राइट इट एवरीथिंग डाउन कि लाइक आर यू रियली प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स योर गोल्स और नॉट. एंड द लास्ट थिंग इज ऑफ कोर्स ये सब आप मेहनत कर रहे हो, बट इज द वर्ल्ड नोटिसिंग एंड appreciating your efforts, be it on your social media or your clients giving you projects or customers giving you more orders. ठीक है. So do that rating system at least in a month. I will ask you 29th और 30th को मैं आपको पूछूंगा रेटिंग सिस्टम करने के लिए, राइट. आई होप यू गॉट अ गुड आइडिया कि इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं. लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स. Let me see calendar system. If you see calendar also Google calendar है. Google calendar का मैं फटाफट दिखा देता हूँ, then we'll move on. So if you can see, we can write everything over here. So if you see FPMP, Food Photography Mastery Program, I see inner circle call. So I've just blocked out this time.
इफ यू कैन ब्लॉक आउट दैट टाइम कि ये सुबह क्या करते हैं, ये तो बहुत ये था, बट प्रॉपरली मेरा रहता है, सब चीज़ों का पूरा ऑक्यूपाइड रहता है, A to Z सब चीज़ों का. इट्स वेरी इजी टू डू एंड फन टू डू बिकॉज you are able to track everything, right? So आज ही if you are able to see, I bought new plants over here पीछे, तो मेरे को प्लांट केयर नेसेसरी करना है, सो आई हैव रिटन इट डाउन ऑन माय कैलेंडर. सो इट्स नॉन नेगोशिएबल फॉर मी कि मेरे को संडे के दिन 15 मिनट प्लांट केयर करना है, in order so that my videos may plants look good, so that plants look good, videos would look good. As a result, my coaching business would be good. ठीक है. सो इट्स ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम दैट 15 मिनट की संडे को दिन नॉन नेगोशियल करना है. इट दैट्स हाउ रूथलेस यू हैव टू बी इन ऑर्डर टू रीच योर गोल्स. एकदम माइन्यूट डिटेल्स में आपको वो प्लान आउट करना है. ठीक है. इफ यू आर नॉट प्लानिंग आउट, यू आर प्लानिंग टू फॉर फेलियर, राइट? So if you are not planning everything, you are planning for failure. That's it. So if you plan out very well, the chances of failure becomes very less. Cool? Yes. Awesome, awesome. So that's what I've planned for you. Let me know if you got good value out of it. क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हैं. I hope you got a good understanding. Let me know. Let me know. Yeah. Cool. Let me know if you have got any doubts. I'll be happy to help you out. मैं इसका template share कर दूंगा on the WhatsApp group. And if you have any doubts accessing that, you can let me know. What's the difference in how you use Notion versus OneNote? That's a good point, actually. I'm a very big nerd when it comes to note taking. I have actually 3 softwares, not 2, and सबके अलग-अलग uses है. But to keep it very simple, OneNote is like my whiteboard. राइट. अगर आपके पास व्हाइट बोर्ड है, आई हैव 2 व्हाइट बोर्ड्स ऑल्सो. सो 2 ऑफलाइन है और 3 ऑनलाइन है. ठीक है. सो इफ यू सी दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, राइट? सो व्हाइट बोर्ड में यू कैन जस्ट राइट एवरीथिंग डाउन. कुछ भी एरो बना सकते हैं, कुछ भी कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं. सो बेसिकली वन नोट इज अ बिग व्हाइट बोर्ड दैट आई कैन कैरी इट विथ मी एवरीवेयर. ठीक है. सो कुछ भी लाइक लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं एंड नोट्स ड्रॉ कर सकते हैं और कितना भी लाइक लंबा वो कर सकते हैं, राइट? इफ यू सी सम ऑफ द नोशन का मेरे ईयरली जो गोल्स है, दे आर वेरी स्कैटर्ड आउट, राइट? सो इफ आई शो यू दिस इज 2024 गोल्स, पूरा स्कैटर्ड आउट है, बट एकदम धीरे धीरे लाइक नीचे अगर आप जाए तो दैट बिकम्स क्लियर, बट एवरीथिंग कैन बी जस्ट जूम्ड आउट. सो मेरे को मैक्रो व्यू भी मिल रहा है, सब चीजें मैंने क्या क्या किया है. आई विल ऑर्गेनाइज दोस नोट्स प्रॉपरली, बट आई कैन जस्ट जूम इन इटसेल्फ. ठीक है. तो इतना जूम इन भी कर सकता हूँ, जूम आउट भी कर सकता हूँ. सी. सो इसमें 2023 में भी बहुत सारे मैंने चीजें लिखे थे, राइट? कूल. सो दैट्स व्हाट आई डू ऑन वन नोट. सो वन नोट इज लाइक डेली थिंग, डेली यूसेज के लिए है. एंड आई यूज इट फॉर जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग कि यार वॉट एवर आई एम थिंकिंग, आई एम डंपिंग एवरीथिंग ऑन वन नोट. देन कम्स नोशन. नोशन इज वेरी सोफेस्टिकेटेड एंड इट्स वेरी क्लीन. तो नोशन ऐसा है ना, लाइक बाकी सब इफ आई, हाँ, आई डिड नॉट शो यू ना, आई विल शो यू दैट ऑल्सो. सो नोशन इज बेसिकली माई हेडक्वार्टर्स फॉर लाइक माई ओन कोचिंग बिजनेस. ठीक है. सो उसमें मैंने पूरा चीजें स्टोर्ड रखे हैं. सो इफ आई शो यू द बिहाइंड द सीन्स ऑफ दिस थिंग, राइट? सो हियर इज माई फोटोग्राफी थिंग. इसमें मेरा पूरा है. सो फूड फोटोग्राफी एजुकेशन बिजनेस ये मैंने रखा है. देन इसमें मेरा क्या क्या है, प्रोडक्ट लिस्ट. सो मैंने क्या क्या चालू किया स्टार्टिंग से. So if I show you, ये lighting basics मैंने एक ebook बनाई थी in July. I used to sell that. Then one-on-one coaching. Then lead magnets. Then एक workshop जो मैंने जनवरी में conduct किया. Then VIP membership, which unluckily it did not work out. So Priyanka actually joined with that VIP membership बहुत पहले September. It was a major flop. Like nobody bought it. ठीक है. Only 2 people bought it. They are in the program right now. So that was that thing. But वो नहीं चला. Then I made a free WhatsApp community. Then एक और अभी आई एम टेकिंग वन पर्सन के लिए है कि उनको लाइक पर्सनलाइज कोचिंग दे रहा हूँ, हाउ टू शूट एंड एडिट वीडियोस लाइक मी फॉर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग योर कोचिंग प्रोग्राम, राइट? सो बेसिकली ऑल ऑफ दिस प्रोडक्ट्स आर ओवर हियर. सो आई राइट एवरीथिंग डाउन कि क्या क्या रहना चाहिए. कंटेंट कैलेंडर क्या है, कंटेंट में भी बहुत सारी चीजें मैंने डाले. सो आई यूज टू पोस्ट 30 डेज के सीरीज वगैरह पहले. सो फूड फोटो फंडामेंटल्स उसका नाम था. सो इफ यू सी इसके पुराने 30 डेज के, एवरीथिंग इज ओवर हियर विद द कैप्शंस एंड एवरीथिंग.
right? So Notion is very sophisticated. You can be as sophisticated as you can make it to be, right? So Notion is very proper, very organized, very structured. And OneNote is like my notebook, जिसमें like scribble वगैरह करो and ये सब चीजें डाल सकते हैं. ठीक है? होप दैट आंसर्स यू जेनोबिया. एंड थर्ड थिंग, जो गूगल कीप जो है, गूगल कीप का एक बेसिक गूगल का एक रहता है, उसमें मैं लाइक जिम में अगर हूँगा एंड आई एम नॉट विलिंग टू ओपन दोज नोट्स सॉफ्टवेयर, आई जस्ट नोट डाउन गूगल कीप पे लाइक रैंडम one liner, two liners things. So that's how I use the Google Keep. So I have like OneNote जो स्क्रिबलिंग के लिए है, व्हाइट बोर्ड सामान यूज करो डेली का. नोशन स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर है, सो दैट दैट बिकम्स योर विकी. विकी एक जो डेटाबेस बोलते हैं किसी चीज का. सो दैट्स मेरा पूरा कोचिंग का डेटाबेस ओवर इज ओवर देयर, राइट? सो दैट्स फॉर नोशन. एंड गूगल कीप आपको कुछ टाइम पास वगैरह लिखना है तो लाइक सब्जी कौन सी लानी है, बेकरी इंग्रेडिएंट्स कौन से लाने हैं, दोस काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी केप्ट ओवर गूगल कीप. हाउ मच टाइम इट विल टेक यू टू मेक दिस नोट्स इन नोशन? ये मैं बिल्ड करते रह लाइक डेली आई एम एडिंग समथिंग और दी अदर, कुछ ना कुछ ऐड करते रहता हूँ. सो इट्स लाइक इट्स अ कंटिन्यूअस एवोल्यूशन. धीरे धीरे मैंने ऐड किया जितने महीनों से. लाइक जनवरी अलोन आई डिड वेबिनार्स, राइट? सो 1,000 people, अप्रोक्स 1,000 people केम इन माई वर्कशॉप्स. सो आई रोट एवरीथिंग डाउन कि क्या करना है, कैसे चेंजेस करना है. ठीक है? सो वो वेबिनार का भी मैंने जो स्ट्रक्चरिंग किया था ऑफ माई वर्कशॉप, आई विल शो यू दैट इट वॉज वेरी chaotic. ये मैं खुद I paid for a lot of workshops since years. If you see, मैंने पूरे workshops जो भी मैंने किए अब तक, I have written everything down. बहुत पहले से 2021, और पहले तो मैं नोटबुक्स में वगैरह रखता था, बट एवरीथिंग इज ओवर हियर. सो इफ आई शो यू माय हैकाथॉन, इसका ऑफ माय वेबिनार, वेबिनार मैंने कैसे प्लान किया. सो एवरी मिनट व्हाट आई हैव टू से, एवरीथिंग इज रिटन ओवर हियर. बहुत डिटेल्ड, बहुत नोट्स बनाए, बहुत उसको फिर और नोट्स बनाए, नोट्स ही बनाते चले गया मैं और एक्शन लेते गया. एंड दैट्स हाउ आई डिड ऑल ऑफ इट. सो दैट्स हाउ यू डू द वेबिनार सेलिंग थिंग, लाइक वो मेरा मैंने किया था, राइट? सो दैट्स हाउ क्रेजी यू कैन गेट about this. Can you tell me about how you break your goals down into actionable steps, and then how this fits into Notion or OneNote? Example, I want to be a food photographer, right? ठीक है. So पहले तो हम journaling exercise करेंगे. ठीक है. So journaling exercise would be your north star. जो हमारा गोल था कि जो मैं जर्नलिंग नोट्स मैंने प्रॉम्प्ट्स दिए थे, उसको फिर से मैं एक लिंक शेयर करूँ क्या उसकी? सो आई विल शेयर द लिंक ऑफ दैट जर्नलिंग प्रॉम्प्ट सो दैट आप देख सको फिर से. पब्लिक व्यू लिंक. जस्ट अ सेकेंड. या, सो ये जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स की लिंक है. पहले तो विल स्टार्ट फ्रॉम देयर. दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट वी स्टार्ट फ्रॉम. क्योंकि वो एक आइडिया है. ये सब कॉम्प्लेक्सिटी को हटा दो, मन मन में से हटा ही दो. पहले पहले हमको लाइक दिल से क्या, लाइक ब्रेन का काम सेकंड नंबर पे, दिल का काम पहला रहना है. ठीक है? सो फर्स्ट लाइक थिंक विथ योर हार्ट, व्हाट एग्जैक्टली डज इट वांट, राइट? सो विल स्टार्ट फ्रॉम दैट, डू द जर्नलिंग फर्स्ट. Then I'll show you one quote also, which I prepared for last time. Last वाला weekend, जो week का inner circle call था, उसके लिए prepare किया था. It's by Danko. So Danko is another creator. उनका भी मैंने course लिया था about writing last year actually. And he actually inspired me to get into this thing, creator economy. Yeah. So let's see. Yeah. Let me know if you are able to see this. Grab a notebook. Unka like it's his post. Grab a notebook, write exactly what you want in your future. Don't miss any detail. Then break it down into goals, decades, years, months, weeks, and days. Every day, write down the 3 levers you can move to create your vision. A dream without clarity is a nightmare, right? So if I try to simplify it according to you, break down your goals into actionable steps. Then how does this fit into Notion? ठीक है. डू यू वांट टू डू इट टुगेदर, लाइक एक एक्सरसाइज करेंगे क्या? जेनोबिया, डू यू वांट टू डू इट राइट नाउ? शुड वी डू इट राइट नाउ? ओके, परफेक्ट. ठीक है. सो लेट्स गो टू आवर ट्रस्टेड फ्रेंड चैट जीपीटी फॉर प्लानिंग एवरीथिंग. ठीक है. आई वॉन्ट यू टू बी माई राइटिंग बडी एंड माई कोच.
for reaching my goals. I am a freelancer. I'll just write it down, copy paste all of this information. पहले ना like whenever you write a prompt on ChatGPT ना directly उसको action मत बोलो, पहले उसको context दो, what you want the ChatGPT to be first, then what you want ChatGPT to do, that is the second number thing. First number is like उनको context दो पहले, right? So um, let's say if let's example it take let I want to be a food photographer, so I'm a freelance. I want to be a freelance food photographer. Then एक तो I want you to ask me questions. Direct दिमाग लगाने की like सोचने की जरूरत ही नहीं. I want you to ask me questions in order to help me journal and plan for taking action for my goals. Ask all the relevant questions. Actually, life coach रहना चाहिए. So life coach, that would be a better thing. Okay. So can you tell me about what draws you to food photography? मैंने क्या बोला? Journaling पहले important है. क्योंकि वो क्यों है? Your why becomes clearer when you journal on that particular thing. Right. So उसने भी यही पूछा. What draws you to food photography? What exactly ticks you? तो वो पहले लिखेंगे. तो हम वो पूरा आंसर करेंगे. Zenobia, can you like unmute yourself and we'll take you a second. Yeah. Are you able to unmute yourself, Zenobia? Yeah, I unmuted myself. Okay. So can you answer this question? I like telling stories behind the food, understanding Hmm. where the food comes from, the people who make it. The food comes from the people who make it. That's nice. Perfect. ये मेरा memory update कर रहा है वो, but ठीक है. It's the same thing. That's wonderful focus. That's a wonderful focus. It adds depth, meaning to your focus work. What steps have you already taken towards becoming a freelance food photographer? बताइए. I've purchased my own gear, set up Hmm. a business. I've contacted restaurants and Amount like कितना गियर लिया है, कैसा गियर लिया, वो तो ठीक है, but amount of basically number of restaurants that you have contacted. at Approx. least 15, 20. Right. So contacted 15 to 20 businesses. Local, what kind of businesses? Local food businesses. Okay. Local food businesses. And what else? And I've taken up courses. Taken courses and coaching programs. Yeah, I think that's it. Okay, cool. Great. So एक एक करके वो questions पूछते जाएगा and then it would like help you to clarify और क्या क्या है. What's your next big milestone or goal in your journey to become freelance food photographer? What do you think? I have goals for the business. I want 1,50,000 per month revenue. Yeah. Right. I What? want reoccurring shoot contracts. Okay. Want brand deals. Constant brand deals. What kind of brand deals? Food brands. Like in what sense? Video, photo. Okay. Food brand, photo and video. And deals of what exactly? Content creation. Okay. Right. So I want you to be as specific as possible. जितना specific जा सकते हो. Content creation deals. Okay.
What else apart from the business ka goals? Your storytelling abilities or anything else? What else? Are you there? Zenobia? Zenobia, are you there? Yeah, I'm there. I got muted. Oh, I want to develop my video storytelling capabilities. I want to learn to do that. I also have to learn to edit, uh, hmm. use more professional softwares like DaVinci, etc. No, एक second. Right, एक second. So develop video storytelling capabilities and learn advanced software like DaVinci. And what else? I also want to find ways to market these skills. Hmm. Want to learn marketing skills um for mm, yeah for these skills. ठीक है? So marketing, videography, and business skills. ठीक है? Let's type that. Those are ambitious. Breakdown. What is what? Okay, I'm clear. I'm unclear on that. ठीक है? Let's write it on that. ठीक है? But उसके पहले, what do you think? What do you think, according to you, what are the specific steps? In order to achieve those goals, Hmm? do more work. I have to reach out to more businesses. I mean, that 15-20 has to become 40. Hmm. I have to shoot more content. I have to Okay. edit more, Okay. Reach out to more businesses reach out to more businesses. from 15 to 20 to 40. Okay. Then you said more content, post more content. Create, post more content. Okay. Create and post more content. I have to practice DaVinci at least every day Hmm. For how many minutes? for at least an hour, I think. Okay, that's great. What else? Then I need to learn video techniques because shooting food is a photograph is Hmm. one ball game, but video is another ball game. Hmm. Right. So camera angles, Hmm. all that. I have an idea, but practice is more important, you know. Yeah. So okay, I get it. ठीक है, तो इसमें से ना, but I am not able to. I know things, but I'm not taking that much action. ठीक है, सो एक एक करके हम और नीचे नीचे जाते रहेंगे एंड ये एंडलेस चलते रहेंगे, ये क्वेश्चन पूछते जाएगा. सो वेन एवर यू थिंक कि ओके आई हैव गॉट क्लैरिटी ऑफ माई थॉट, देन यू कैन जस्ट क्विट इट एंड ओके टेल इट कि यार बस हो जा, आई कैन हेल्प मी आउट विद दिस अदर थिंग. Taking action can sometimes be hardest part. What's holding you back from taking on more actions on these goals? So ये actually मैंने journaling prompt में एक बताया था कि जो लास्ट वाला एक है, what is your goal and what is your bottleneck? कि अगर आपका गोल है for taking action for food photography के चीजें, what is your bottleneck? ये what is stopping you from taking action for doing these activities? What do you think? Yeah. Okay, I'll give you a simple example with DaVinci. If sitting to do 1 hour of editing can become boring, हाँ. and also when you're starting out, हम्म. you don't know enough, then हम्म. you have to stop, open a tutorial, learn, come back, and then you get distracted. So Okay. distractions, and it's boring also because one hour at a time, हम्म. and it's very heavy. Okay. Editing is boring for राइट. सो हम और डीप चले गए वो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर रहे थे एंड इट्स ऑल रिलेटेड टू योर माइंडसेट एंड योर बिहेवियर्स बेसिकली.
right? So generally, like that is the only culprit when you figure out ki kya problem hai. So editing is boring for 1 hour. You get distracted in what exactly? Distracted? I have to How? keep opening tutorials, right? I don't know how to. Let's say I want to do a J cut, so I have to know how to place the audio track, where to get effects. So I have Mm-hmm. to toggle on and off with DaVinci and YouTube. So then I get lost Lost how? because one tutorial leads you to another tutorial, and that Hmm. 1 hour you spent for practice is Hmm. Right. gone So on tutorials. okay. बोरिंग हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, और तीसरी चीज हमने बोली थी कोई थी वो? Hmm. What It's else was? heavy, I said. हाँ, heavy in terms of what? It gets like a lot to think about. Heavy in It's terms of. like a learning curve, very steep learning curve. Got it. Cool. So ये 3 प्रॉब्लम्स है, being heavy, being it ये बोरिंग हो जाता है, बहुत heavy हो जाता है, and you get distracted by jumping from one video to another, especially with Yeah. vast information. Have you thought about breaking down your editing practice into shorter, more focused sessions? This could help prevent boredom and makes it easier to stay focused. Have you ever done that? Yeah, so I use a technique called Pomodoro where you set a timer, you get an app, you set a timer for 25 minutes, हाँ. and for every 25 minutes that you do work, you Mm-hmm. get a 10-minute break to do whatever you want. Okay. So I do that. So I keep short periods of edit, and Mm-hmm. then I just do whatever I want. Then I come back. That's nice. So what's the problem over there, Finn? It's still ongoing, na? I have not made that much progress still doing this. Acha. So lack of progress in even after breaking down into smaller I've things. made progress, but I still haven't made that much progress. Hmm. So there can be a possibility कि उसमें your expectations are way too large, or maybe you are not getting the right direction. So that those are the possibilities. So इसको ही और जो train of thought हमारा जा रहा है चैट जीपीटी को, और उसमें like डब्बे ऐड करते जाएंगे हम of whatever you can do. So just start with the journaling thing first, then take the help of ChatGPT to figure out. Just tell it, "Yaar, be my life coach now, and just ask me questions so I can start thinking about it in that direction." Okay, so that's the thing. Anything else? Anything else apart from that? और कैसा है? You had some specific question. Broken down किया है अपन ने, but let me go back over there. Actionable steps. And then how this fits into Notion or OneNote. ठीक है, हाँ. So अभी अगर अपने को actionable steps तो बताए नहीं पर अभी, ठीक है. So let's go back. That is okay. Give me actionable steps to do every day. फिर एक्शनेबल स्टेप्स ढूंढेंगे. एडिटिंग गोल हम करेंगे कि 1 आवर में कितना एग्जैक्टली करना है. नंबर ऑफ नहीं, ये आउटपुट वाला गोल नहीं रखते हैं, इनपुट वाला गोल रखते हैं. लिमिट द ट्यूटोरियल वॉचिंग, दैट्स अ गुड थिंग. ट्यूटोरियल हेल में नहीं घुसना है हमें. फोकस्ड एडिटिंग. What I can tell you is एडिटिंग में अगर आप जाते हो ना, तो what you can just focus on is वन बाय वन फोकस करते हैं कि बस अभी हम स्पेशल इफेक्ट्स पे जाते हैं, कि अभी हम बस साउंड इफेक्ट्स पे खेलते हैं, या फिर जस्ट वन थिंग एट अ टाइम अगर आप लोगे ना, तो दैट बिकम्स मच क्लियरर. एंड फिर एक पूरा वीक ले लीजिए टू अंडरस्टैंड ओनली द कलर पेज ऑफ डाविंची. ओनली दैट 1 वीक डाविंची के लिए बस कलर पेज पे डाल रहे. That's all. And you watch every other tutorial for only that page. ठीक है. And then we will move on to the next page, क्योंकि वो seasons में रखना पड़ता है. Every day if you are doing the whole thing, it becomes very monstrous to follow through. ठीक है. So that's the thing. Well, I'll tell you my thing. So November, December में मैंने ये प्रोग्राम बनाया, and day by day like I'm like वो November and December was when 80% of my program was made. राइट. ये जो पूरे सेशंस है 80% ऑफ देम गॉट मेड. देन फिर धीरे धीरे आई फोकस्ड ऑन अदर थिंग्स लाइक ओके आई कैन वर्क ऑन द वेबिनार नाउ, देन आई कैन वर्क ऑन द 1-to-1 सेल्स. राइट. सो एक एक मैं चीजें सीखते गया, एक एक चीजें करते गया. सो एक गोल रखो पूरे महीने का कि हमको बस in my food photography I just want to work on lighting. That is what I can also suggest you.
आपको अगर वीडियो में बहुत वीक हो तो डायरेक्टली बस 1 महीना पूरा वीडियो ही प्रैक्टिस करो, दैट्स ऑल. फॉरगेट अबाउट फोटोग्राफी. And you can, like, I give you the whole permission ki yaar, you can just forget about photography and just focus on video. If your focus is, your goal is about videos कि आपको आपके होम बेकिंग बिजनेस के लिए 100 रील्स बनाने हैं, लेट्स टेक एग्जांपल, 3 महीने में हमको 100 रील्स बनाने हैं, तो you just have that goal, forget about photography and do that, right? I'll tell you my example. जो मैं मेरे coaching like I have joined another coaching program for this thing. So उसमें I have ignored every other thing that the core is offering. Right now, I'm just focusing on my one-to-one selling abilities. So उसमें एक ही part में focus करो, that's the one-to-one selling. How do you get on a sales call and how do you have a conversation so that it becomes clearer to the other person that this program is what they need. ठीक है, so वही मैं focus कर रहा हूँ. I've ignored every other thing. So वो एक focus रहना चाहिए कि what is the single thing that I want to work on and ignore every other thing that exists on the planet. Right, so that's what it should be. It should come down to. ठीक है, actionable steps हो गए. फिर उसको अगर आप टास्क ट्रैकिंग वाले, मैं नोशन टेम्पलेट में बोला हूँ जिसपे ऐसा, लेट्स टेक टास्क ट्रैकिंग में अभी आपको बेकिंग एंड सेल्स एंड मार्केटिंग में ऐसा अगर आपने डाला है, सो नॉट नॉट लाइक सेम बी रोल्स आप फ्रीलांसर्स में भी यूज कर सकते हो या फिर होम बेकिंग के लिए. योर फर्स्ट स्टेप वुड बी व्हाट, बिल्ड अ बी रोल लाइब्रेरी. तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन में आप 100 वीडियोस खींच लो. इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, राइट? सो बट अभी आपने इधर रख दिया इसको नॉट स्टार्टेड में या फिर प्रोग्रेस में. इसको शो कर देता हूँ. सो लेट्स स्टे, आपने इन प्रोग्रेस में इसको बिल्ड अ बी रोल लाइब्रेरी में रख दिया है. देन हम, ये तो एक ओवरऑल गोल रखा है कि मार्केटिंग का क्या गोल है, फिर हमारा ऑपरेशंस का क्या गोल है. सो फॉर अ फ्रीलांसर दैट कुड बी व्हाट, इसमें अगर आप नॉट नॉट स्टार्टर में जा रहे हो तो इट कैन बी व्हाट एग्जैक्टली, प्लानिंग अ शूट, प्लानिंग अ शूट फॉर द नेक्स्ट वीक. या फिर अगर आप खुद का कंटेंट शूट कर रहे हो तो इसका प्लानिंग इधर डाल सकते हो. आई मीन दोनों में रह सकता है, मार्केटिंग या फिर फुलफिलमेंट में. बट डे टू डे वर्क में आप इधर ये सब चीजें डाल सकते हो. ये पूरे मैंने कॉलम्स बनाए रखे हैं, यू कैन जस्ट एडिट इट ऑन योर ओन. सो एडिटिंग का आपका है, सो जेनोबिया यू कैन जस्ट पुट इट हियर. सो आई विल जस्ट फोकस ऑन कटिंग प्रोसेस और लेट्स से कलर ग्रेडिंग, राइट? सो कलर ग्रेडिंग में इधर आप ऐड करोगे एंड यू कैन मेक इट इनटू अ पार्ट्स. सो कलर ग्रेडिंग का अगर आप 10 पार्ट्स में सीख रहे हो, आर्बिट्री कोई भी नंबर दे रहा हूं मैं, आप 1 पार्ट में भी सीख सकते हैं, 10 पार्ट में भी सीख सकते हैं, 50 पार्ट्स में भी सीख सकते हैं. लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, यू आर लर्निंग कलर ग्रेडिंग बाय योरसेल्फ बाय वाचिंग यू ट्यूटोरियल्स इन 5 डिफरेंट पार्ट्स. सो लेट्स टेक दिस एज पार्ट 1, राइट? सो आप कलर ग्रेडिंग पार्ट 1 में जो भी ट्यूटोरियल्स में बोला ये सब पूरा प्लान आउट करोगे एंड इधर ही लिखेंगे कि दिस इज व्हाट आई लर्न एंड दिस इज व्हाट आई डिड. ऐसा नहीं है कि यार अपन, लाइक वी, इट्स नॉट दैट वी डोंट डू इट, इट्स दैट वी डोंट ट्रैक इट. एंड सिंस वी डोंट ट्रैक इट वी फील ओवरवेल्म कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बिकॉज वी हैव नॉट ट्रैक्ड इट. इसलिए मैंने वो लाइक मार्च का जो मैंने दिखाया था आपको वन नोट पे, व्हेन आई एक्चुअली सॉ कि मैंने मार्च में क्या क्या चीजें की है, आई जस्ट गॉट सो हैप्पी कि यार बहुत सारी चीजें करी मैंने एक साथ, राइट? इफ आई शो यू दिस थिंग यू विल बी जस्ट माइंड ब्लोन, व्हाट डिड आई डू, आई टेल यू दैट. तो अभी आप जो ये वाला वेबसाइट देख रहे हो ना, दिस वेबसाइट, I edited this website in a single day. You know what did I do? I gave 2000 rupees. I sent 2000 rupees to my friend in the morning and I said कि रात को सोने के पहले, if I don't have this website ready and up and running, you can get that 2000 rupees, right? So basically I will lose if I don't upload it at the night. So I had a bet with myself. ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई डिड इन अ सिंगल डे कि ऐड करना है ये सब चीजें. तो इतने अनरियलिस्टिक गोल्स खुद के लिए अगर आपने रखे ना, एंड इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि अगर आप हिट नहीं कर पाते. आई हैड दिस वेबसाइट ऑलमोस्ट रेडी पहले, सो इसलिए मैं हिट कर पाया. समटाइम्स इट्स बहुत अनरियलिस्टिक बट स्टिल, एटलीस्ट इफ यू आर शूटिंग फॉर द स्टार्स यू लैंड अप ऑन द क्लाउड्स, इट्स समथिंग लाइक दैट, राइट? सो बहुत अनरियलिस्टिक गोल्स रखिए एंड थोड़ा बहुत तो रीच कर ही लेंगे. इट्स बेटर देन लिविंग एन एवरेज existence in terms of whatever your goals are, right? Did you learn website designing also? I did not learn it, I just
did it by myself. So I used to do the freelancing for a lot of different clients last year. So social media marketer था मैं last year तक, freelancer social media marketer. So I used to do for my clients पहले. खुद से ही सीखा वो भी. एंड ये जब खुद का मैंने लैंडिंग पेज बनाया था ना, तो भाई whenever you do it for yourself, it's the biggest thing, right? So if you are doing it for your clients, so Zenobia and Mer and Kalyani, if you are doing it for your clients, whatever you are doing for your clients, if you do with the same consistency and efforts for yourself, you are going to get paid 10 times more than what your clients are going to pay, right? So working with clients is good, but working for yourself is even better. ठीक है. So if you can just use your photography skills, videography skills, and मैं Canva भी सिखा रहा हूँ. So whatever skills जो मैं सिखा रहा हूँ, अगर आप खुद पे काम कर सकते हैं, make content, तो that would be even better. Cool. Right. Perfect. एक second. Please guide on how to change notes into actions. I didn't get you, Rashi. आप फिर से पूछ सकते हैं, मुझे समझा नहीं. One note. Okay. I think I have answered that. Okay. When did you start this journey, if I may ask? What journey exactly? I didn't get you. What journey? Freelancing तो I started 2019 वगैरह से वगैरह. Photography तो I showed you ना, I showed you guys, मैं बचपन का वो एल्बम दिखाया था मैंने 2013-14 का. So do you want to see that? It's a little embarrassing, but ठीक है, मैं दिखा. Yes. तो ये तो मैंने 10th में वगैरह लाइक 9th और 10th में समथिंग लाइक दैट मैंने बनाया था. सो बेसिकली वॉट एवर द होल मोटो ऑफ दिस वॉज आई वॉन्टेड टू डॉक्यूमेंट माई जर्नी. सो वो जर्नी भी नहीं था, इट वॉज जस्ट फेसबुक पे फोटोज डालता था एंड मैं उसको ही प्रिंट करा है, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव इट. बट उसमें इफ यू रीड इट एट द वेरी स्टार्ट, pardon my bad handwriting, if you can read it, I'll help you out. As people grow, so does their quality of photos. 9th और 10th में मैंने ये लिखा था, ठीक है. So बहुत लाइक पहले से ही मैं 9th और 10th में ही आई यूज्ड टू गो आउट ड्यूरिंग माय बोर्ड टाइम्स. मेरे को बहुत बोर होता था, so I used to capture the photos of flowers and all basic stuff like that. Food photography, I got into that in 2017, 18, 19, something like that. So वो धीरे धीरे बढ़ते गया. And I told you now, so there is one person, Avni, she's from Vadodara. So she's in 9th grade right now. Imagine, मेरे को अगर मेरे जैसा पर्सन अभी, if I would have coached myself in 9th grade, I can't even imagine where would I be right now, right? So she is doing so much like good at in 9th standard itself. So she has got a lot of runway. That does not mean कि हमारे पास नहीं है. It's just that वो thought आता है, right? Even in gym fitness वाला था कि I used to think कि why did not I start the fitness journey back in uh, when I was 18 or 16 like that. But it's okay. I did it. I started it from 21. It's not a problem. Okay. So that's how you progress. अगर आप डिसाइड आप आज कर लो ना, तो थिंग्स कैन चेंज इन अ ईयर. इट लेजिट चेंज्ड फॉर मी. एंड लाइक आई टेल यू, आई वेंट टू हिमाचल in May 2023, and I was like, I want to be a creator, and I will be like, I'll start teaching and coaching. So I started in वापस आने के बाद जून जुलाई में I made my first ebook. Right. So ebook banaya, then I had the offline workshop, then I took one-on-one calls, then I made a lot of content. Then मैंने फिर webinars लिए जनवरी में, very hectic but awesome. Then फिर अलग सा है. So it's a journey. So it's just you have to decide. And how do you have to decide? Just journal and plan everything out. Right. So I hope you got a lot of value from this. Cool. Yes. Perfect. Yeah. Right. So if anybody wants to share their uh, opinions, their suggestions, their what they found out today, you can let me know. Then we'll move on to the review section. Right. So if you want to share your experience right now, did you learn something new? And if you learned something new, what did you learn? And more than that, how are you going to apply it for yourself to make your life better?
Anybody? You can just raise your hands. Yes. Yeah, Meher, please go ahead. एक second, I'll unmute you. Yeah, please go ahead. Yeah, are you able to unmute, Meher? Yeah. Yeah. The main thing that I'm going to take away from today was to focus on one thing at a time. For now also, like, because doing freelancing, learning those skills as well, and how to market yourself, I'm doing those skills as well. So obviously it Hmm. gets a little overwhelming, and you feel that you didn't do this today, so you are not growing fast enough, or like you are not doing enough. So I think that is a good point, like to set a monthly thing that on like this month I will focus on this skill only. Doesn't mean you stop doing the other things, but like I'm just like, my main focus is that skill, and if I'm able to improve that skill by the end of that month, it's a win. Yeah, So that's nice. That's nice. Perfect. Thanks a lot for sharing that, Meher. yeah. Cool. Awesome. One more question. Do you learn more than one new skill at a time, or do you focus on only on one skill? That's a great question, Zenobia. So, I am by nature a very curious person. So, I'm like learning everything at the same time. But the way I have balanced that, balance that feature of mine, which is like learn all the things all the time, is basically focus on one thing. Ki, and focus से ज्यादा ना एक्शन लेना है. फोकस भी नहीं, फोकस लाइक कम्स आफ्टरवर्ड्स. टेक एक्शन. इम्परफेक्ट एक्शन भी रहा तभी भी वो इम्परफेक्टली करना है मुझे. एंड आई हैव एक्चुअली एक सेकंड. या सो आई हैव मैसिव बायस टूवर्ड्स एक्शन. मैं एक्शन लेता हूँ. एंड मेरा ऐसा है ना, आई गेट वेरी माइंडफुल वॉट एवर आई एम डूइंग. सो फॉर टू आवर्स लाइक 6 to 8 हुआ ऑन वेंसडे, 7 to 9 हुआ ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे हुआ. And in even the one-on-one calls, by nature I am curious, and as well curious के साथ I am also very mindful in that terms. So कोई भी मैं अगर चीज कर रहा हूँ तो I am like giving 200% attention to that, right? So that's the two things. If you can balance the curiosity with mindfulness, it becomes a very easy job for you to handle new things and the old things that you want to do properly as well, right? बट वो मंथली गोल्स वाला तो मैं खुद फॉलो करता हूँ कि यार एक मंथ में प्रॉपरली ये सब तो करना ही है. ठीक है, जिम है, प्रॉपर सो भी रहा हूँ मैं, एवरीथिंग इज प्रॉपर, बट एम आई डूइंग समथिंग टू इम्प्रूव दैट? दैट इज ऑल्सो दैट थिंग, राइट? सो वो इम्प्रूव करना तो है, वन स्किल एट अ टाइम, बट एट द सेम टाइम आई एम अ क्यूरियस पर्सन. सो आई एम लिटरली, इफ यू सी माई क्रोम टैब्स ऑल्सो ना, बहुत रैंडम चीजें खुले रहेंगे, राइट? सो एक मैं कुछ और खोलते रहूंगा, बहुत अलग अलग वीडियोस ओपन रहते हैं हमेशा, एंड इट्स ऑल द टाइम. Lot of tabs are open. So mentally also there's a lot of tabs, but I have a strict thing कि मेरे सामने इतने इतने tasks है जो non negotiables है. Going to the gym is a non negotiable, right? Communication on the DMs non negotiable. Story डालना, post edit करना, ये सब non negotiables है, right? So this you have to do, and for that, as I said, journal, then फिर actionable steps, and फिर that should be your non negotiables. Because मेरे like coach ने बताया था कि you do not hit your goals, you do not reach your goals, but you very well hit your standards. So जो आपके standards रहते हैं ना, if you can just follow those standards, make your goals as your standards. आप कुछ अगर standard रखते हो तो you do not go below that standard. अगर मेरे को केक में ऐसे ऐसे ingredients use करने हैं तो you would not go below that standard, right? So why not make your goal as your standard? So जो भी आप daily actions ले रहे हो तो that is your standard. So if you have that ideal vision, like जो भी ideal प्रथमेश करना चाहेगा after 1 year, is he doing it right now? If in the next year, let's say if I take my example, next year I want to write and make a YouTube video, 10 minutes long YouTube videos every single day. Am I doing it right now? If I am not doing it right now, ठीक है, एक month down the line when things will align, I can create that. But if you can just start taking action कि यार वो वीडियो बनाने के लिए तो मेरे को स्क्रिप्टिंग तो करनी पड़ेगी 10 मिनट वीडियो बनाने के लिए,
तो even if I'm making a 20-second Instagram reel video का script every single day, I am still that higher vision वाला प्रथमेश, right? Because that I have set up my standard कि सुबह उठ के मेरे को स्क्रिप्टिंग करनी है, कुछ भी हो जाए, चाहे धूप निकली है बाहर, चाहे सनलाइट आए नहीं, चाहे बारिश आ रही है, वॉट एवर, आई जस्ट गेट माई लैपटॉप, go to the balcony, sit and script. That's the thing that I have to do. So what is that particular activity that should be your non-negotiable? You have to figure out. And it's not just one activity, बहुत सारे activities रहेंगे ऐसे, but main top 3 कौन से? Lever moving जो activities बोला था आपने, what are those? एक have a vision in front of you कि exactly क्या करना है. मेरा तो vision board आपको दिखाया क्या मैंने? Did I show you? ठीक है, बाद में दिखाता हूँ आराम से, बहुत ज़्यादा चीज़ें, बट बेसिकली हैव अ विजन बोर्ड रेडी कि एग्जैक्टली नो कि आप कैसे दिखने वाले हो, क्या करने वाले हो, कैसा रहेगा आपके बेकिंग बिजनेस में, आपके फ्रीलांस बिजनेस में क्या रहेगा, हैव दैट रेडी. अगर वो मन में ही पॉसिबिलिटी नहीं बनी है तो रियलिटी में बनेगी क्या? आप अगर विजन बोर्ड नहीं बनाओगे, जर्नलिंग नहीं करोगे, सोचोगे नहीं इसमें, मंथली एटलीस्ट वंस इन अ मंथ आप सोचोगे नहीं, तो वो रियलिटी बनेगी नहीं, बिकॉज यू हैव नॉट थॉट अबाउट इट. पॉसिबिलिटी ही नहीं है वो आपके मन में, राइट? Cool, cool. Let me know if you have got any things that you want to share. Just do one thing. Yeah. Yeah. So we'll focus on the review thing. We'll review your photos. Chalo, let's go. Right. इसमें म्यूजिक डाला है क्या? म्यूजिक नहीं डाला है गेस. इफ और आई एम नॉट. अच्छा, म्यूजिक नहीं डाला है अब तक. थोड़ा अंडर एक्सपोज हो गया है जेनोबिया, पूरा फुटेज अंडर एक्सपोज हो गया. आर यू देयर? जेनोबिया, आर यू देयर? Yeah, I know. It's a little dark. It's very हाँ. dark actually. यू कैन जस्ट रेज योर, जो कर्व्स वाला रहता है ना, आप उसको ये शेडोज को रेज कर सकते हैं सो दैट वो थोड़ा सा फेड दिखाई देगा एटलीस्ट. तो वो एक है. देन अकॉर्डिंग टू मी ना, वीडियो एक्चुअली मैं ये सैटरडे को बताऊंगा कि वीडियो एडिट करते कि मेरी फिलोसॉफी क्या है, तो आई थिंक दैट वुड बी मच बेटर. सैटरडे को मैं बताऊं. यू हैव अटेंडेड दैट राइट, वीडियो एडिटिंग? Yes. हाँ. सो स्टार्टिंग में आई टोल्ड ना, वो जो हुक वाला रहता है इन द फर्स्ट 3 seconds. सो दिस इज अ नाइस थिंग कि कैट का है, बट लाइक इट्स अ लिटिल मिसमैच ना कि कैट वाला है, देन एटलीस्ट ठीक है कैट रख सकते हो बिकॉज इट्स वेरी क्यूट टू लुक एट. सेकंड क्लिप, बट एग क्रॉकेट रहना चाहिए, कंपलसरी एग क्रॉकेट रहना चाहिए, कुछ ना कुछ उसका फूड आइटम दिखना चाहिए. सो मैं वही सर्च कर रहा था स्टार्टिंग में कि कौन सा वो क्लिप है कि एग क्रॉकेट्स दिख रहे हैं. Okay. बट ऐसा मेरे को लाइक एक डिफाइनिंग मूवमेंट जो एक रहता है मनी शॉट, वो इसमें दिखा नहीं. एक फाइनल वाला दिखना चाहिए ना कि यार जो बनाया मैंने क्या बनाया, राइट? ये वाला बना है उसका, बट फोटो प्रॉपर नहीं है जो आपने लास्ट में दिखाया, राइट? Yeah. इफ यू कैन हैव दैट एज द मनी शॉट कि यार ये तो बेस्ट क्लिप रहना ही चाहिए. ऑलवेज मेक श्योर एवरीवन, जो आपका फूड सब्जेक्ट है ना, जो एंड प्रिपरेशन है, दैट शुड बी द बेस्ट लुकिंग क्लिप एवर. एंड वो तो आखिरी में भी रहता है एंड स्टार्टिंग में भी रहता है, क्योंकि लाइक यू वांट द व्यूअर टू स्टिक टिल द एंड ना. सो गिव देम अ गुड रीजन कि ओके आप 1 मिनट का वीडियो देख रहे हो, बट दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर. तो दैट इज यू आर मैनेजिंग देयर एक्सपेक्टेशंस अपफ्रंट. स्टार्टिंग के 3-5 seconds में यू आर क्लियर. एंड आई एम ऑल्सो गिविंग सजेशंस फ्रॉम अ सोशल मीडिया वाले पर्सपेक्टिव से. बट यू हैव, इफ यू हैव सम अदर गोल कि अगर बस डॉक्यूमेंट ही करना है इसकी प्रोसेस, या फिर कुकिंग शो वाला कुछ गोल है अलग, तो इट्स गुड बिकॉज इट गिव्स अ वेरी नाइस रिलैक्स्ड वाइब. सो आई डोंट वांट यू टू लाइक थिंक कि यार आई एम इम्पोजिंग फास्ट No, पेस. no, no. I agree with you. I think also there's no context, ना आपको पता नहीं क्या हो रहा है, who is this, तो
maybe once the audio also comes in, you'll get some context. Hook Huh? also is definitely needed. And Huh. last picture, which is in the video, actually I shot with my phone. Phone. It was not even with the camera. So even I was not very happy, but that was the only picture I had. But I can make it again and reshoot. But you're right, one money shot I think will Yeah. make a big difference. Yeah. I think even ये जो ऑयल फ्राइंग वाला शॉट है ना, ये वाला भी एक क्लिप स्टार्ट में रहना चाहिए इसके बाद. Plus, can you describe me the place where it's shot? It's a 450-year-old house. It's the kitchen in the house. Huh? And I didn't see the. it's Yeah. yeah, that's what I'm saying. Na, तो context नहीं है. So you Yeah. don't know where you are. Yeah. I Wait. think those things are missing. So Yes. that shot of the table actually was supposed to give you some idea of the kitchen, but I guess it does not really convey that. Table वाला कौन सा? The second shot after the cat. This one? Hmm. What is the context? I didn't get it. It's just like a chicken head वाला एक pot है. मुझे इतना ही समझ रहा है इस पे. Yeah, but this is common in these types of old kitchens. Again, it's not obvious. I understand what you're saying. हाँ I हाँ should maybe take more wide angle shots हाँ. for establishing where you are, right? Because you don't know where this is being shot. Right. So basically now I'll tell you marketing में there is the thing कि यार you dumb down everything. Like I'll tell you जो आपने वो एल्बम दिखाया था ना मैंने like 10th standard में I had this big thesaurus डिक्शनरी जैसे thesaurus रहती है जिसमें like हाँ. similar words रहते हैं. तो I used to be a big thesaurus nerds कि यार मेरे को या thesaurus में words लेने हैं और मस्त मैं पूरे Facebook के कैप्शन में वही लिखूंगा. Right. But then I understood कि यार it's more important to share the clarity of thought rather than the fancy words. तो मैंने fancy words हटा दिए and I just focused on the clarity of thought and that a 5-year-old person can also read my messages. तो अभी अगर आप मेरी stories देखते हो, मेरे post पढ़ते हो या फिर whatever I write it in a way that even my 5-year-old cousin would like read it. Right. So basically you are dumbing down everything so that everyone would be able to understand that. So that is in the writing perspective. But think about it in a visual perspective also, right? Make videos and photos so simple and so attention grabbing that even a person who is visually impaired can see and look at it and think, yaar, अरे ये video तो अच्छा है, right? So basically you have widened the net so big that everybody is your potential audience for that video, right? So they don't have to use their brains to figure out what exactly are you trying to show. Right? वो पूरा काम हमको निकाल ही देना है. Guessing game पूरा निकाल देना है. जो भी videos में दिखाना है. Right? So if you see in this video that you showed to me, black वाली chair पीछे, right? So that is grabbing attention. ये पूरा like ये चिकन वाले इस पे मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ उसके हेड को एंड उसको इनफ लाइट भी नहीं मिल रही है तो आई एम नॉट एबल टू लुक एट इट. तो ये सब चीजें लाइक बेसिकली यू आर आस्किंग मी टू यूज माई ब्रेन्स टू लुक एट इट. तो आप अगर आपके व्यूअर्स को ये बोलोगे ना तो व्यूअर्स वुड नॉट पे अटेंशन एंड अटेंशन इज द मोस्ट, मैंने स्टार्टिंग में बोला था अटेंशन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इवन मोर देन द मनी इटसेल्फ. राइट? मनी दे देते हैं लोग, अटेंशन नहीं देते. आई लर्न इट द वेरी हार्ड वे. बहुत लाइक ठीक है. आई फाउंड आउट कि यार मनी इज वेरी मच इजी टू हैव बट अटेंशन नहीं देते लोग. सो मेक इट सो इजी फॉर देम टू कंज्यूम so that everyone can just enjoy it without thinking about anything, be it words, be it photos, be it videos, be it design. Words, photos, video, design. राइट. सो ये चारों चीजों अगर आप मास्टर कर पाए विच आई एम गोइंग टू हेल्प यू एज वेल ऑल्सो. वर्ड्स, वीडियो, फोटो, डिजाइन. आप ये चार चीजें अच्छे से बोल पाए ना और स्पीकिंग, आप ये 5 चीजें अगर अच्छे से बोल पाए ना लाइक आपको कोई नहीं रोक सकता है. आपको जो भी करना है लाइफ में, कुछ भी करना है, कोचिंग करना है, शूट्स कर रहे हैं, बेकिंग करना है, आपको लोगों को सिखाना है, वॉट एवर. वर्ड्स, स्पीकिंग, वीडियो, फोटो, डिजाइन. Because it's just basically what you want to show to the world. These are 5 mediums जो बोलते हैं ना, 5 media to communicate your thoughts. So it becomes a crucial thing that you learn these 5 things. Cool. Photo, let's look at the photo also. Natural light. Okay. Next second.
Cool. So if I look at this photo right now, this is nice. Natural light का है. The food is good. What's that food item? Shrimps है क्या? No, it's like a potato dish. Okay. Right. So there. Japanese. अच्छा. Sorry, क्या बोल रहे थे? It's a Japanese potato dish. Okay, okay. I see. ठीक है. Looks very interesting, but क्या हुआ ना, बहुत ज़्यादा texture है आजू बाजू. Like the wooden texture here, then the pebbles वाले texture here, then the leaf over here. So your dish is not that highlighted properly. So if you can replace this wooden wala thing with a white colored plate, white color backdrop, that would have been better. And I know कि ये backdrop नहीं है, ये पूरा उसका like आपने ground पे रखा है या फिर like whatever edge है of Yeah. that color dish, आप वहाँ पे रखा है आपने. Correct. Right. So I know that cannot be changed. I'm just giving you suggestion कि आप बहुत ज़्यादा textures collide हो रहे हैं. Got it. And this thing is, it's a little off balance. आप अगर picture देख पा रहे हो तो it's on to the left hand side. Right. I put it on the grid line, like that was my idea. You know, there are two grid lines, so this is on one. Okay. But ये grid line है. And the other grid line is yeah, khali. हाँ. तो आप horizon वाले shots जब लेते हो ना, तो आप middle में horizon ले लिए ना अभी. Meaning? What do I mean by that is, if your frame is like this, the edge Yeah. of the table is here, right? हाँ. The edge of the table right now is here, which is dividing your photo in two parts, the upper and bottom. Correct. Correct. तो उसके जगह what you have to do when you are doing the rule of thirds, आप ये rule of thirds जो grid रहता है फोन में, आपने ऐसे लगाया, right? Yes. तो rule of third is good, but इधर भी थोड़ा सा space रहना चाहिए था in my opinion. And then apart from that space, that this horizon of this table should have been over this place. So थोड़ा नीचे के अच्छा. एंगल से लेना चाहिए था आपने, Okay. right? So क्योंकि ये distracting हो जाता है थोड़ा सा, प्लस ये वाला एलिमेंट अननेसेसरी था, तो यू कैन रिमूव इट. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस ओवर हियर, तो बहुत ज्यादा स्पेस हो गई थोड़ा सा. और लेफ्ट हैंड साइड में इतना तो भी स्पेस चाहिए था, राइट? Okay. देन और क्या बोल सकते हैं, मिंट लीव्स. और थोड़ा डल लग रहा है ये, इसको ब्राइट कर सकते हैं थोड़ा. सो कर्व्स वाला जो एडजस्टमेंट लेयर रहता है ना, इफ यू सी, जो टॉप वाला पॉइंट है मिडल वाले पॉइंट के बीच में एक पॉइंट ड्रॉप कीजिए एंड जस्ट लिफ्ट दैट पॉइंट अप so that the brighter portion gets brighter, even brighter, right? So थोड़ा सा वो डल लगता है अभी फिलहाल, वो थोड़ा डल लग रहा है. This picture that you have sent, little dull, not that dull, but not according to my taste. Like मैं और थोड़ा सा इसको brighten करूंगा. So if I can show you photo P, right? So इसको हम डाउनलोड करके let's take it example. मैं क्या बोल रहा हूँ, डाउनलोड हो जा, या राइट. सो इसको मैं अगर लेयर्स का पे, राइट, लेयर्स ये कर्व्स है, एंड कर्व्स में मैंने क्या बोला था, ये मिडल वाला पॉइंट एंड एंड वाले पॉइंट के बीच में एक पॉइंट है ये वाला. सो इधर बेसिकली मैं लिफ्ट करूंगा इसको, बट इफ यू सी थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट लग रहा है अभी, तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉन्ट्रास्ट दूंगा बाय ड्रॉपिंग द ये वाला मिडल एंड बॉटम के बीच में वाला जो पॉइंट है उसको ड्रॉप करूंगा. सो आई एम गेटिंग अ वेरी कॉन्ट्रास्टिंग लुकिंग फोटो, राइट? सो इफ आई कैन हाइड दिस, राइट, सो दिस इज द फोटो बिफोर आफ्टर. उसके हाइलाइट्स अभी ब्लो हो गए, तो मेरे को और थोड़े से नेसेसरी चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट? सो आई वुड हैव टू गो टू कैमरा रॉ रहता है इसमें, इसलिए फोटोशॉप वाला यूआई नहीं पसंद है मुझे इसमें. बट आई होप यू गॉट द आइडिया कि कर्व्स बेसिकली एडजस्टमेंट करना ऐसे. सो यू कैन डू इट इन लाइटरूम ऑल्सो, ज़ेनोबिया. लिफ्ट दैट पार्ट अप, ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट लिफ्ट कीजिए एंड थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट डालने के लिए नीचे का करना है, ठीक है? एंड देन फिर हाइलाइट्स को कम करना है. जो हाइलाइट्स एक रहता है ना प्रॉपर्टी इन लाइटरूम, Yeah. Yeah. तो Understood. लाइटरूम, या सो लाइटरूम में हाइलाइट्स कम कीजिए. एंड सेकेंड थिंग वुड बी, जो ये लाइट ग्रीन ब्लू पीछे कलर है ना, पीछे ग्रीन ब्लू कलर है, सो उसको HSL लाइटरूम में, HSL में जाके यू कैन डिक्रीज द सैचुरेशन ऑफ दैट ग्रीन ब्लू ऑल्सो, सो दैट वो कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाएगा उसमें. सो आई डोंट नो, इट लुक्स अ लिटिल डल,
एंड आई थिंक वो इसका टेम्परेचर भी थोड़ा सा ये है, इट्स अ लिटिल कूलर पिक्चर इफ यू सी. सो इफ आई कैन गो टू कलर बैलेंस, नहीं कलर बैलेंस नहीं है, कहाँ पे I रहता है? edited this in Lightroom also, so I can change these things. हाँ हाँ, गुड गुड. सो मैं अभी ये मेरे सामने खुला था, मेरे को लाइट रूम नहीं खोलना था इसलिए बता रहा था. बट वही, आई होप यू गॉट अ गुड आइडिया कि मैंने क्या बोला, ये सब चीजें Yeah, I delete. understood. Yeah. Right, so that's the thing. Perfect. That's the feedback. Cool. Awesome. Let me check. Okay, sorry. Uh, 5 things, right? So word, photo, video, design, and speaking. Yes. Good, good. You got it. Okay. हाँ, सो वर्ड्स बेसिकली मैं वर्ड्स लिखने के लिए बोल रहा हूँ. वर्ड्स इज बेसिकली राइटिंग दैट पोर्शन, बिकॉज वॉट एवर यू आर डूइंग, राइटिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने अभी बोला, दैट इज द थॉट आर्टिकुलेशन एक्सरसाइज दैट आई हैव बीन फॉलोइंग, राइट? सो द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट आई एवर रिसीव्ड फ्रॉम अ क्लाइंट वाज नॉट कि यार तेरा फोटो अच्छा है. The best compliment that I've got from a client was that, Prathamesh, I really like the way that you are articulating your thoughts. मेरे को एक जन ने बोला था, and that was my best day ever, right? So words is for writing, speaking is for speaking, जो भी है. Speaking में of course there is a tonality, voice modulation, slow, fast, ये सब चीजें बोल सकते हो, and then you can just go down. So whatever you're speaking actually changes the emotion in front of you, right? So I think in less than a year I will hire a coach, a speaking coach or something like that. So I'll share the details about that also, क्योंकि मेरे को करना है. Like I take a lot of pauses and my vocal cord is not that strong, so मैं ज्यादा बोल नहीं पाता हूँ. That's why I think I have stopped webinars also. 2 घंटा चल जाता है बट 2.5-3 घंटा मेरे से नहीं हो पाता है. सो बट आई विल हायर अ स्पीकिंग वाला कोच, मेरे को करना ही है वो तो. कूल कूल. एनीथिंग एल्स, एनी अदर डाउट्स, एनी अदर थिंग्स दैट आई वांट टू शेयर? लेट मी जस्ट सी, और कुछ मैंने लिखा है क्या? हम्म, राइट, आई थिंक उतना ही है. हाँ, सो जो आप एवरीडे वाला लिखते हो ना, वन नोट पे आप कोई भी सॉफ्टवेयर पे लिखोगे, एवरीडे कुछ ना कुछ कर रहे हो. संडे को मेक श्योर, संडे सैटरडे मंडे वॉट एवर योर डे यू आर कंफर्टेबल विथ, वॉट आई डू इज आई गो टू द कैफे एवरी सिंगल डे. बट अर्लियर आई यूज टू गो टू कैफेज ऑन संडेज एंड टेक माई लैपटॉप विथ मी प्रॉपरली एंड पूरा कंडेंस करता था इंफॉर्मेशन. सो इफ आई शो यू वन नोट में, I have this thing written over here. Week 1 condensation, week 2 condensation. So basically मैं रोज कुछ ना कुछ लिख रहा हूँ, right? So उसका रोज कुछ ना कुछ का मैं प्रॉपरली एक जगह पे स्टोर करता हूँ, so that I can see exactly over here. सब चीजें मेरे mentioned है over here. So basically that's the whole condensation part, कि आप वीक में एक बार, whenever you get time, 1 or 2 hours, you sit down, you write, and you take those points from every day and you store it somewhere so that you can see exactly कहाँ पे क्या करना है. ठीक है? तो दैट्स द कंडेंसेशन पार्ट. एक दिन लो, खुद के लिए लो एक दिन. एक दिन भी नहीं, 1 घंटा लीजिए, जस्ट पूरा वीक का रिकैप करने के लिए. एंड आई वुड सजेस्ट कि राइट द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग व्हेन योर ब्रेन इज क्लियर, योर ब्रेन इज फ्रेश. राइट इट देन. कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं रहते, फैमिली सो के, बेस्ट टाइम एवर. Select that time and open your laptop, open your notebook and just write. जर्नल एवरी सिंगल डे, कुछ ना कुछ जर्नल कीजिए, कुछ ना कुछ लिखिए, कुछ ना कुछ प्लान रखिए. नहीं तो आपका वो ओवरवेलमिंग थॉट्स ना, दैट टेक्स ओवर योर लाइफ, राइट? इफ यू आर नॉट जर्नलिंग योर थॉट्स, यू आर नॉट आर्टिकुलेटिंग योर थॉट्स, द थॉट्स ऑफ कंफ्यूजन टेक्स ओवर. सो इट्स बेटर टू स्पेंड सम टाइम ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग इटसेल्फ. ठीक है? हाँ, बस इतना ही है. आई थिंक इतना ठीक है आज के लिए. कूल. यस. Let me know if you want to talk about anything, ask me about anything about marketing, sales, photos, videos, design, food photography, content creation, strategy.
anything, any other doubts that you have? Yeah, Rupali, you want to say something? Yeah. Yeah. Is there any particular like time as such when you should post your when you post on social media? Mm-hmm. Yeah, so basically for posting on social media now, what it's there ki like whenever your majority of audiences live are using the app, only on those times just before that time you should post it on social media. So for example, if you go to, I hope everybody has a creator account on social media, like personal account नहीं रहना चाहिए. लाइक वो आप क्रिएटर हो ना, लाइक आप बिजनेस हो या क्रिएटर हो तो बिजनेस मत रखिए, क्रिएटर अकाउंट रहना चाहिए. एंड इन क्रिएटर अकाउंट यू एक्चुअली आर एबल टू सी द इनसाइट्स आपके. सो इफ यू गो टू हियर, आई विल शेयर ना इधर से डायरेक्टली, आई विल शेयर माय स्क्रीन, आई विल शो यू द टाइमिंग्स. गिव मी अ सेकंड, आई विल कनेक्ट माय फोन. आपका अगर क्रिएटर अकाउंट रहता है तो यू गेट एक्चुअली अ इनसाइट कि व्हेन योर मेजॉरिटी ऑफ फॉलोअर्स आर अवेलेबल एज इन को कहाँ पे लाइक कब प्रॉपरली आते हैं. सो इफ यू गो टू प्रोफेशनल डैशबोर्ड्स, यू गो टू टोटल फॉलोअर्स, आपको एक दिखेगा टोटल फॉलोअर्स, दिस थिंग टोटल फॉलोअर्स. यू गो डाउन एंड नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो ट्यूसडेज के दिन दिख रहा है. On 6 p.m. at 6 p.m. 7 to 19 people are active. So generally my audience is active at 6 p.m. mostly. सबसे ज्यादा अगर आप बार्स देख रहे हो तो 6 p.m. पे ही दिख रहा है, राइट. सो आई वुड पोस्ट एट 5:50, 5:45, 6:15 के आसपास, बिकॉज आई नो कि मोस्ट ऑफ माई ऑडियंस विच इज लाइक 7 to 19, विच इज अप्रॉक्स half of my audience, are active at 6 p.m. So that's when I would post my content, because that's a higher chance कि मेरा पोस्ट लोग देखे, राइट. So that's the follower वाला content. But अगर आप रील्स वगैरह पोस्ट कर रहे हो तो मोस्टली रील्स आर गोइंग टूवर्ड्स द नॉन फॉलोअर्स, मोस्टली, नॉट एवरी टाइम, बहुत डिपेंड करता है एक्चुअली. तो नॉन फॉलोअर्स डज नॉट मैटर, नॉन फॉलोअर्स दे आर एग्जिस्ट कर रहे हैं लोग फ्रॉम एवरीवेयर. इट्स अबाउट दैट थिंग. बट इफ यू आर पोस्टिंग फोटोज कैरेसोल्स, इवनिंग पे ट्राई कीजिए. लाइक आपका पहले ऑडियंस देखिए एग्जैक्टली व्हेन इज इट एक्टिव, देन मेक दैट डिसीजन कि कब पोस्ट करना चाहिए वो चीज. Cool. Thank you. Yes. Perfect. Yes. What a wonderful session. It's a never ending learning. That's nice. Perfect. Perfect. Yes. Cool. I'm glad that you got a lot of value. I was a little skeptical आज कि यार people would say यार तू food photography सिखाना है, ये सब क्या कर रहा है. But I hope you got a lot of value out of it because it helped me. So I wanted to share those things with you. Right. Perfect. I just want you to do one thing. If you have not given a Google review to me, you can share that. I will share you the link. अभी आप ये करो पहले. And if you have given the Google review, I would request you to write everything that you learned today on that WhatsApp group so that you can get other people in the group can know what they are missing on. So FOMO create karao. Log what they are missing on exactly, right? So I'm giving the Google wala review. If you can just share a few lines, whatever your experience was right now with me for food photography, for everything else, just I would request you to share your experiences. Just share that. A second. Yeah. Cool. Right. So this is the link for Google reviews. If you have not done it, please share it. It helps a lot. Starting was like everything was going over my head, but later on, very interesting. Arey, awesome, awesome. I hope you found it valuable. राइट. सो इसके बाद में आप ग्रुप पे प्लीज शेयर कीजिए एंड आई विल शेयर द नोशन का टेम्पलेट फॉर यू टू यूज दैट सो दैट यू कैन जस्ट डुप्लीकेट एंड स्टार्ट यूजिंग. एंड नोशन इज अ लिटिल बिट, थोड़ा सा लर्निंग कर्व है उसमें, समझने के लिए देरी लगती है. बट इफ यू आर इंटरेस्टेड इनफ, लाइक यू विल फाइंड द वे आउट. बहुत यूट्यूब पे सब अवेलेबल है. जस्ट फिगर आउट, उसको डुप्लीकेट करके चालू कीजिए पहले. स्टार्ट फर्स्ट एंड देन लर्न,
अगर आप लर्निंग पे चले जाओगे तो ट्यूटोरियल हेल्प पे घुस जाते हो, सो वो नहीं है। टाइम स्लॉट ऑन इंस्टा, आई मिस दैट। अच्छा, सो टाइम स्लॉट मैंने बताया कि लाइक मोस्ट ऑफ द फॉलोअर्स, व्हेन योर मोस्ट ऑफ द फॉलोअर्स आर active on Instagram, just check it. And how do you check it? You have to make your Instagram as a creator account, creator या business. So उसमें आपको वो followers के दिखते हैं. When is your most number of followers are active in that amount of time? So if you see profile में जाइए, go to professional dashboard और right hand side से ही दिखेगा. इधर ये 3 dots है ना, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, एंड इनसाइट्स पे जा सकते हैं आप. इनसाइट्स दिख रहा है? इनसाइट्स या सो इनसाइट्स खोलने के बाद ऐसा खुलेगा ऑफ फॉलोअर्स. ये ओपन नहीं हो रहा मेरे इसमें. टोटल फॉलोअर्स दिखेगा. सो वो टोटल फॉलोअर्स में जाके आपको, व्हाई इज इट नॉट ओपनिंग? समथिंग इज अप विथ माय इंस्टाग्राम. लॉग आउट हो गए होगे क्या? आई वुड हैव टू सी. समथिंग इज अप विथ माय इंस्टाग्राम, बट जस्ट हैव अ लुक उस पे. ठीक है, perfect. Can we schedule post reels beforehand? हाँ, in Instagram. So the last reel yesterday, before yesterday, which I shared on Instagram, I scheduled it. So Instagram पे अभी वो फीचर आ गया है कि आप जब पोस्ट करते हो, इधर आप जब पोस्ट करने जाते हो रील पे, वॉट एवर रील इफ यू चूज. सो लेट्स टेक एग्जाम्पल. अभी माई इंस्टाग्राम इज एक्टिंग अप. Yesterday's videos, if you see, I go to next, and जब ये पोस्टिंग की बारी आती है ना, so scroll down and advanced settings में जाइए. Scroll down, advanced settings, and उसमें एक schedule वाला आता है, schedule this reel, right? So we can do that, or you can do it from your Meta Business Suite also. Will not get into the Meta Business Suite, but अभी आप directly you can do it from your phone, so it becomes better. ठीक है, perfect. Cool. So I'll see you guys. Please recap everything in the WhatsApp group and let other people know what they missed on. Don't just recap, let other people know what they missed on by sharing your experiences. ठीक है, perfect. And if you can share a Google review, that would be very good. मैंने ये link share कर दी है. Again, share कर रहा हूँ. Yeah, perfect. Cool. Awesome. Thanks a lot, everyone. I'll see you guys on Saturday. Yes. Perfect. Awesome. Yeah, Awesome. thank you so much. Yes. Yeah. Thank you. You're welcome. Chalo. Yeah. Bye bye. Bye bye. Bye.